Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives. Good morning, everyone. We start with morning call with technicals and derivatives. So yesterday the Nifty was closed at 17,624 level, and Bank Nifty was closed at 39,455. So more or less, yesterday was a one-hour trading session when both the indexes are traded in the range. So what we believe is that for all this couple of days, when the Nifty was facing resistance at 17,800, and Bank Nifty was facing resistance at 40,000. So for today's session with the global market, the SGX is already up by 100 points, and we believe that as and when 17,800 is taken out on the higher side, there will be short covering plus the addition of fresh longs will be added. This is what we sense, and the same level for the Bank Nifty is 40,000. So whenever 40,000 levels are taken out on the Bank Nifty, I think there will be short covering on the Bank Nifty as well. So the bias for the day is positive. Secondly, there is a put call ratio. The put call ratio for the Nifty is 1.07. So it is above 1. So basically, whenever the put call ratio is above 1, it's a positive, and the put call ratio for the Bank Nifty is 0.8. So with the short covering, the put call ratio will also climb above 1, which will also add to the positive strength. So overall bias for the Nifty and Bank Nifty both is positive. And we have also covered a buy call in the Bank Nifty. We are for the weekly expiry, we have initiated a buy call in 39,500 call option in the range of 222 to 230 with a stop loss of 100 for the target of 470. So we also have a buy in Bank Nifty call option. Further that, if you talk of the FI data, they were slightly marginally sold by 1,000 contracts. They are still 80% short in the market in the index future, which I believe maybe since they already short 80% in the market, if we see the breakouts, then they probably will enter into some of the long trades, which will also add some strength to the market. So also the net the bias is positive. Any decline should be viewed to add long positions. From the sector point of view, cement is one segment which we are looking from the positive side. Any corrections in the cement space can be viewed for the stock specific buy. The call for the day is Cochin shape. We are recommending a buy in the range of 382 to 385 with a stop loss of 372 for the target of 407. That's all from technical. Over to Archana Madam. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So a few updates from my side, starting with Interglobal Aviation. So Mr. Rakesh Gangwal, the co-founder of Indigo, and his family are looking to sell a 2.8% stake in Interglobal Aviation, the holding company which runs Indigo Airlines. That will be through a block deal. As part of the block deal, as many as 10.8 million shares belonging to the Gangwal family have been listed for sale at a price of 1996 for 1996 crore. So that could put the stock, for midterm in pressure, and we can see some negative bias. On Zydus Life Sciences, Zydus has achieved positive proof of concept in its phase 2 clinical study of NLRP3 inhibitor and in patients with Copesin associated with periodic syndrome. So this is called as CAPS. It's a rare and lifelong autoinflammatory condition caused by activating mutations and is classified as an orphan disease. The phase 2 trial was conducted in Australia. So that comes as a positive development on Zydus license front. On Aavas Finance, CARE upgrades credit rating on Aavas Finance long-term facilities. Based on the rating assessment undertaken by CARE Ratings, the company's long-term facilities has been upgraded to AA from AA-, which reaffirming the short-term facilities rating. Outlook on the long-term facilities rating is revised to stable from positive. So that is again positive for the company. On Concord Drugs, Concord Drugs gets board approval for acquisition of 100% stake in Proton Remedies. The company said that the board has given the approval for 100% stake for a price of 283 per share on cash basis, and issue up to 12 lakh convertible warrants to the promoters on the preferential basis. On the Schindler Electric Infrastructure, so the company's board has given nod for production capacity expansion. The company has received the approval to enhance the capacity
in vacuum interrupters and vacuum circuit breakers by setting up a manufacturing unit in Kolkata. On Zee Entertainment, the company has received NCLT approval to convene shareholder meet for considering and approving Sony deal. The NCLT directed it to hold the shareholders meet on October 14, 2022. On IRCTC, the company has emerged as the successful bidder in sale of commercial built-up space in WTC, Nauroji Nagar, New Delhi. On Reddington, India, so Apple has launched iPhone 14 series. It intends to manufacture it in India about 2 months after, after the launch. And Reddington is a reseller of Apple products in India. On Concord, the Union Cabinet approved the lowering the railway land licensing fees to 1.5%, which is expected to facilitate the disinvestment process of Concord. On TCS, the Nokia has selected TCS for enhancing its employee experience. As a part of this deal, TCS will digitize Nokia's HR system. The new integrated platform will help Nokia enhance the employee experience and boost productivity. So that is like positive for TCS. Currently, we have holding on the stock with a target price of 3110. Infosys has entered into a 5-year deal with Spirit Aerosystems, which is manufacturer of commercial airplanes, defense systems, and jets. The company will provide engineering services for product development of commercial, business jet, and maintenance services. The financial details of the deal are not yet disclosed. However, Spirit has a fleet size of around 182 airplanes and had clock revenue of around $4 billion in 2019. So it comes as a positive development for Infi, and currently we have holding on the stock with a target price of 1510. And lastly, on cement, we attended webinar on cement sector organized by CRISIL. So few key updates for FY23, cement demand growth is expected to be better at 8 to 10% on YoY basis compared to 8% seen in last year. The weakness is seen in demand in Q2 of FY23, particularly in non-trade segment, but with steady GST collection and government surpluses, this segment to get filled in the H2 of FY23. All India utilization level of the industry to improve going forward. However, we believe that after this FY25, there could be some decrease in utilization because of a higher demand. The higher capacity announced. Amongst all the cement players, we prefer Ultratech. So that's it from my side. Now I request Prabhakar sir to take it from here. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Archana. Good morning, team. IPM, pharma, Indian pharma manufacturing data has come. The IPM grew 12.1% in August 22. It is the third consecutive month of growth, and we need to understand post-COVID, now pharma as a sector has not been growing, but now consistently India pharma sales has been improving. 12.1% is double-digit growth, and previously we had 14% and 18% growth. And the companies which have grown very good in the market share, Sun Pharma has grown at 13.4%, and Sun Pharma Indian market share is 8.6%. Sun Pharma is a leader in Indian pharma industry, and you had Mankind Pharma also, which is 19.8% growth, and Torrent at 15.5%, and IPCA 17.4%. These are few companies which have grown, but MNC companies have done better. Merck, AstraZeneca, they have grown about 20%. So these are few things to watch out for. Life insurance data has come. The private players growth was 9% year-on-year basis in August 22. In that, HDFC Life has seen the best growth, and the growth is 17%, 17.4% year-on-year growth, whereas SBI Life, there is a decline of 5.2%, but last year same month they grew by 60%. So because of the base effect, the growth is not up to the mark, but still we prefer SBI Life and HDFC Life,
ICICI Pru. ICICI Pru has declined by 14%, but still life insurance as a sector will do very good. We like HDFC Life and SBI Life. SBI Life yesterday made an all-time high, but base effect, the growth was not up to the mark. HEG, Hindustan Electro Graphite, said it will become the world's largest graphite producer. Now they are investing on a capex of 2,000 crores, and it will be in 2 phases in Madhya Pradesh with 100 acres of land. Now they are looking for land in Gwalior or Indore. Now they have talked to the Chief Minister of the state. Pound falls to the lowest level since 1985 against US dollar, almost the lowest level in 37 years. So even euro, no, they also is correcting. So dollar index is gaining strength, but other currencies are weakening. In that, Indian currency is faring better. US BBC reported US tech company that received federal funding will be barred from building facility in China for 10 years. So this is very positive for US companies now, because now and Indian companies also, because developed nations are taking, they are sending a signal China is not a place to grow their products. So previously, whatever was done R&D in US, they manufactured in China, but that is not happening. Apple iPhone 14 is manufactured in India along with China, but very soon all these models will be only manufactured in India, is my understanding. Archana talked about Indigo. I have done one study on Indigo. Mr. Rakesh Ganguwal, he is selling his stake, almost. Now he is holding 37% stake. He is selling a stake where he will collect 2,000 crores. But the important is not about his selling stake. No, the important is in next 5 years he will exit Indigo, and he has started his career in United Airlines, which is in US, and then he went on to be the CEO and group chairman of US Airways. And we need to understand now. We need to understand that this Akasha Airways, which Rakesh Jhunjhunwala started with other people. Now that is where Rakesh Ganguwal will join, is what the market is saying. And the person who was instrumental in Indigo growth was this person. But there is a difference between Rahul Bhatia and Rakesh Ganguwal. So that is something which is not going well. So I am not too positive on Indigo. That is why I have given this background. So if the way the new airline has come, it is similar to how Indigo started. When Indigo started, it started with one aircraft, similar way, and the lease and buyback, buy and lease back formula was done by Rakesh Ganguwal, because he had a very good interaction with Boeing and other companies. So now that this thing will go. Garden Reach, Musgon Dock, BEL, HAL, BDL, all defense PSU stock are making all-time high, except for Cochin Shipyard and Midani. These are 2 PSU defense manufacturing company which is not made high. But we need to understand there are many things which are positive for Cochin Shipyard. I think today in our technical pick, Cochin Shipyard is given. Cochin Shipyard bought a Hooghly dock facility in Bengal. It is a 200-year-old facility. They have revamped by investing 120 crores, and today that facility is operational. And they have invested in 1,800 crore dry dock facility in Cochin, and which will be operation by 2024. And if all these comes, then the scaling up will be very good. I am very positive on Cochin Shipyard for the stock for doubling from current level. And in very interesting news,
No, it is about global market cap. Now, last 12 months, global market cap has reduced by 15.9%. That is 19 trillion. While India has seen a rise of 3.1%. And now India has a 3.4% of the world listed companies, and it is highest ever. Previous highest was in 2010 when India had a market share of 3.3% of the global market share. So the average has been 2.5. So something very different, and this is making the world get noticed. When global markets are correcting, India is not correcting for this reason. There is one more news on nitric acid prices. Globally, nitric acid prices have increased. Now, yesterday, Nikunj just posted that. Now, even in US, even in China, the prices have started to increase. And now I wanted to find the major Indian manufacturer. So, Deepak Fertilizer, GNFC, GSFC are three major manufacturers of nitric acid. Deepak Fertilizer has a capacity of 130,000 metric ton, and today it is the largest manufacturer of nitric acid, that too concentrated nitric acid. GNFC would become the largest by end of this year. They are increasing their capacity, and end of the year there will be 165,000 metric ton. Ambuja Cement and Adani Port are two stocks which are looking interesting. Cement, anyway, price hike has been done in North India and East India. That is the market rumors. But Adani Port, because Concor is an important theme which played yesterday. Concor was in focus as union government lowered railway land license fee from 6% to 1.5% for certain usages, and the lease period has been increased from 5 years to 35 years. So this will pay way for stake sale for Concor, and the best company to buy Concor will be Adani Port, which makes a lot of sense. Adani Port almost holds 25% of the total ports in India, and capacity-wise, the total port inward and outward movement also, they control more than 30%. So Adani Port is the best suited person to buy that. So that is why I said Adani Port should be in focus. Yesterday it started to rally. So with that, over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरग्लोब एविएशन के जो राकेश गंगवाल जी हैं, जो कि को फाउंडर प्रमोटर है, वो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं। 2.8% स्टेक है उसमें, और ये ब्लॉक डील रहेगी 10.8 मिलियन शेयर्स की, और उसको प्राइसिंग को जिन्होंने दिया है 2000 करोड़ के आसपास का। सेकेंडली देखेंगे जायडस लाइफ साइंस को भी एक उनको पॉजिटिव प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिला है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टडी के लिए, जो कि पेशेंट्स ZYL1 कैप्स रहता है, और उन्होंने ये पेशेंट्स की टेस्टिंग ऑस्ट्रेलिया में की थी, और बेसिकली पीरियोडिक सिंड्रोम जो सेप्रोविन है उसके लिए, क्योंकि और ये रेयर लाइफ लॉन्ग ऑटो इन्फेक्शन कंडीशन है। थर्ड देखेंगे आवास फाइनेंसर की जो क्रेडिट रेटिंग है उसे अपग्रेड कर दी गई है लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज के लिए। केयर ने उसे AA में कर दी है, जो कि पहले AA- थी। एंड श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए भी देखा जाए तो जैसे उनकी जो बोर्ड ने अप्रूवल दी है कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए, और उनको अप्रूवल मिल गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि वैक्यूम इंटरप्रेटर्स और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं कोलकाता में। कॉन्कॉर्ड ड्रग्स को भी एक अप्रूवल मिल गया है एक्विजिशन करने के लिए 100% स्टेक, जो कि प्रोटॉन रेमेडीज है में, और ये 283 पर शेयर के रेट से वो कैश बेसिस पे एक्वायर करेंगे। अप टू 12 लाख वारंट्स है, और वो शेयर प्राइस करेंगे 33 रुपीज पर वारंट। जी एंटरटेनमेंट को भी अप्रूवल मिल गया है कंपनी को NCLT से, और वे कन्वीन करना चाहेंगे शेयर होल्डर मीट, जो कि 14 अक्टूबर के पहले। IRCTC भी एक सक्सेसफुल बिल्डर बना है कमर्शियल, अपनी जो सेल करना चाहते हैं कमर्शियल बिल्डिंग, जो कि WTC नौरोजी नगर में है। जैसे हमने देखा कल एप्पल का iPhone 14 लॉन्च हो गया है, तो इसमें जो और आफ्टर 2 मंथ्स वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होगा, और उसकी जो मेजर बेनिफिशियरी रहेंगे वो रेटिंगटन रहेंगे, क्योंकि वो रीसेलर है एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए। नोकिया को भी नोकिया ने सिलेक्ट किया है TCS को अपनी एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने के लिए,
और नोकिया के एचआर सिस्टम को भी वो एनहांस करेंगे, उसमें वो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस और बूस्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा टीसीएस के लिए। और टोटल इनकी बेस देखी जाए तो 88,000 है अक्रॉस 130 कंट्रीज के साथ। और करेंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है टारगेट प्राइस 3110 के साथ। इन्फोसिस ने भी एक 5 ईयर डील साइन किया स्पिरिट एरो सिस्टम, जो कि मैन्युफैक्चर करती कमर्शियल प्लेन डिफेंस सिस्टम और जेट। इन्फोसिस भी प्रोवाइड करेगा उन्हें इंजीनियरिंग सर्विस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल और बिजनेस जेट और मेंटेनेंस सर्विस के लिए। इसकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, बट अगर हम देखा जाए तो इसकी फ्लीट साइज देखा जाए तो 182 एयरप्लेन्स है और इनकी जो रेवेन्यू है नियर अबाउट $4 बिलियन के आसपास है 2019 में। और ये 8th लार्जेस्ट पैसेंजर कैरियर है नॉर्थ अमेरिका में। सो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट रहेगा इन्फी के लिए। और हमारी इसकी होल्ड रेटिंग है विद 1500 के 10 के टारगेट प्राइस के साथ। हमने कल वेबिनार अटेंड किया था सीमेंट सेक्टर पे, जो कि क्रिसल ने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने कहा कि सीमेंट की जो डिमांड है वो ग्रो करेगी 8 से 10% ईयर ऑन ईयर, और FY23 में देखा जाए तो 8% रहेगी। जो कि हमें वीकनेस दिख सकती है डिमांड सेकेंड हाफ में FY20, क्योंकि जो कि नॉन ट्रेड सेगमेंट से बेसिकली आ सकता है ये। बट स्टेडी जीएसटी करेक्शन और गवर्नमेंट सरप्लस के चलते उन्हें लगता है कि सेगमेंट में थोड़ा सा फ्लिप मिल सकता है। और अगर इसका ऑल इंडिया यूटिलाइजेशन लेवल्स भी देखा जाए तो वो इम्प्रूव होगा FY22 से 24, बट वो थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है FY25, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़ जाएगी, उसके चलते थोड़ा सा हमें डिमांड में स्लो डाउन मिल सकती है। सो ओवरऑल अगर सेक्टर में हम देखा जाए तो हमारी बेस्ट पिक है अल्ट्राटेक। फिर हम अभी बाकी इसमें देखा जाए तो जो कल फार्मा का डेटा है, अगर आईपीएम की देखा जाए तो टोटल 12.1% अगस्त मंथ में ग्रो हुई है। और ये 3 मंथ के हाईएस्ट ग्रोथ में हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर को बेसिकली। और सेल्स भी देखा जाए तो अच्छी दिख रही है, 14 से 18% के आसपास जनरली रहती है, तो अभी 12% आफ्टर कोविड के बाद। और इसमें जो कंपनी हाईएस्ट मार्केट शेयर है सन फार्मा, जो कि 13.4% है, उसमें से 8.6 उनका डोमेस्टिक है जो कि लीडर है। सेकेंड देखा जाए तो मैनकाइंड है जो कि 19.8%, टोरेंट फार्मा 15.5% और एप्का जो लैब है वो 17% का है। बट इनसे बेटर एमएनसी कंपनी ने किया, जो कि मर्क है, एस्ट्राजेनेका, फाइजर है, जिनका 20% प्लस है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के भी डेटा आ गए। प्राइवेट जो इंश्योरेंस है उनका 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया अगस्त में। और एचडीएफसी लाइफ सबसे बेस्ट था 17% के साथ। और एसबीआई लाइफ जो देखा जाए उनकी डी ग्रोथ देखिएगा 5.2%, क्योंकि सेम मंथ लास्ट ईयर में देखेंगे तो उन्होंने कुछ 60% के आसपास क्लॉक किया था, तो उसके चलते थोड़ा बेस इफेक्ट के चलते हुए डी ग्रो है। और सेम आईसीआईसीआई प्रू में भी 14% का हमें डी ग्रोथ देखा गया है। और हमारी अगर सब में सबसे बेस्ट पिक बोलेंगे तो एसबीआई लाइफ, सेकेंड एचडीएफसी लाइफ, थर्ड आईपीओ रहेगी। और अभी हम देख रहे हैं एसबीआई लाइफ भी ऑल टाइम हाइक कर रहा है उसके चलते भी। एचईजी जो कि वर्ल्ड की ग्राफाइट कंपनी है, उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 करोड़ से 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे इंक्रीज करने के लिए। और वे एमपी में लैंड ढूंढ रहे हैं 100 एकर्स का, जो कि ग्वालियर के आसपास या इंदौर के आसपास रहेगा, जिसके लिए वे सीएम से बात करने वाले हैं। यूएसडी पाउंड का देखा जाए तो 37 ईयर लो पे चल रहा है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ भी हो रहा है। वैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर के चलते सारी करेंसीज वीक हो रही है, बट हमारी जो इंडियन करेंसी है वो उन सबसे बेटर फेयर कर रही है। बीबीसी ने कहा है कि जो कंपनी जो कि फेड से फंडिंग लेगी वो बाहर रहेगी, उन्हें बाहर करते जाएगा, चाइना में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। और ये देखा जाए तो धीरे धीरे सब कंपनी से भी चाइना से अवॉइड कर रही है, तो इंडिया के लिए एक स्वीट स्पॉट बनता है। और इंडिया में जो कंपनीज है, और जैसे एप्पल भी देखा जाए तो अभी उन्होंने प्रोडक्शन इंडिया में भी वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपना वो सारा प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट करके इंडिया कर देंगे। और एप्पल 14 का भी वहीं यही प्रोडक्शन होने वाला है। हाँ, इंडिगो के जैसे सर ने कहा कि इंडिगो के बारे में जो अभी जो है वो राकेश गंगवाल जी, जो कि इनके प्रमोटर से स्टिक सेल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वे जो अकासा से सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था यूनाइटेड एयरलाइंस से, सेकंड फिर यूएस एयरवेज में गए, और अभी जो अकासा एयरवेज है तो राकेश गंगवाल जी यहाँ से धीरे से एग्जिट करके अकासा को वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि राहुल भाटी और राकेश गंगवाल जी से देखा जाए तो राकेश गंगवाल जी इज बेटर, क्योंकि उन्होंने मतलब इंडिगो को स्क्रैच से मतलब जैसे खड़ा किया है, वैसे आकाशा भी वैसे ही जा रहे सिंगल एयरक्राफ्ट से, और बाय एंड लीज बैक पॉलिसी पे ही वो भी जाना चाहती है। हम डिफेंस स्टॉक्स में देखे जाए तो जीआरएसी, मजडा डॉक, एचएल, बीएल सब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, मैधानी के अलावा कोचिन शिपयार्ड को भी यहाँ से हमें लगता है यहाँ से मीन्स यहाँ से ये डबल हो सकता है, और मतलब इसमें स्कोप है अच्छा, जिस तरह के ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे हैं बड़े उसके चलते। और उन्होंने एक हुगली में डॉक भी बाय किया है बंगाल में, जो कि 120 करोड़ के आसपास है, उसमें भी 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये ड्राई डॉक रहेगा कोचिन शिपयार्ड का, और वो अपनी कैपेसिटी को स्केल अप करेंगे।
कल हमने एक पोस्ट किया था, ग्लोबल मार्केट कैप का जो है वो देखा जाए तो रिड्यूस हो गया 15.9% से, जो कि $9 ट्रिलियन का है। इंडिया का इसमें अगर हम देखा जाए तो 3.4% है, जो कि वर्ल्ड की सारी लिस्टेड कंपनीज के इसमें चलते हैं। और प्रीवियस हमने देखा है 2010 में था, जो कि 3.3% था ग्लोबल मार्केट कैप का शेयर, और एवरेज देखा जाए तो 2.5% रहता है। तो एक ये पॉजिटिव है। नाइट्रिक एसिड की भी प्राइसेस यूएस और चाइना में राइज हो चुकी है राइज हो चुकी है। और इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स में सबसे जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो कि दीपक फर्टिलाइजर, जीएनएफसी और जीएसएफसी। जीएनएफसी की टोटल कैपेसिटी है 1.3 लाख मेट्रिक टन की, और जीएनएफसी की इस साल तक वो बढ़ा के 1.65 मेट्रिक टन करने, तो उनकी सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी रहेगी। अंबुजा और अडानी पोर्ट में भी इंटरेस्टिंग है। तो इस अंबुजा तो बेसिकली सीमेंट्स के न्यूज़ पे चल रहा था। अडानी पोर्ट्स के लिए एक ये फायदा है कि अगर ये कॉन्कोर को बाय कर लेते हैं, और जो आरएलएफ फी जो 6% से 1.5% रही है, सो ये कि बेटर है। और क्योंकि जो इनकी लीज बैक पीरियड है उसे भी इंक्रीज कर दी है 5 ईयर्स से 35 ईयर्स के लिए, और इनकी जो कैपेसिटी मार्केट शेयर है वो 30% के आता है। तो अगर कॉन्कोर को अडानी पोर्ट्स बाय आउट करती है तो सबसे बेटर और सबसे बेनिफिशियरी वही रह सकता है। उसके चलते हमने कल स्टॉक में भी करंट देखे और अपमूव देखा था। So that's it from my end. Thank you everyone for attending the morning call. You may now disconnect.